if I'm audible now. Am I audible? Yes, am I audible? अब तो आ गया मुझे आपके पीछे से आवाज आ रही है। सोनाली मुझे आपके पीछे से आवाज आ रही है, आगे हो तो क्या? Okay, thanks a lot for confirming. Okay, thanks a lot for confirming. Sorry for the glitch. So, I was saying about the strategy. I had mentioned that probably I was on mute then, but there was some technical issue with the system. So, sorry about that. So, yeah. So, I was saying that yesterday we had a session by Arunima ma'am, and in that session we discussed an overall strategy that how should we proceed, if you want to become a PO, a bank a PO, or maybe even a bank clerk. What is the strategy that you should follow if you want to clear the exam with flying colors or just become an officer? So if you have missed that video, please watch it, and you will gain a lot of information about the right approach that you need to follow throughout the year for all the exams. All right. And today we will specifically see the strategy for the English section, right? If you feel that your English is strong, and you may think that you don't need this type of guidance, but guidance will never go wasted, right? And also, sometimes it happens that when we know something, we know that this is our strength, we just kind of ignore it or take it for granted. And that is what we don't have to do. We have to polish our strengths, and also we have to work on our weaknesses, right? So we don't have to become complacent when it comes to our strengths, and also we don't have to be scared when it comes to our weaknesses. All right. So if English is your strength, just stay with us, and I'm sure that definitely you will learn something. And having a right strategy always helps us. Like I just said, that whenever we do anything, whenever we are working or whenever we are preparing for anything, mostly it is your planning. Approx 60% goes to your planning, and the rest of the time should go in your efforts, right? And with that 60% planning helps you bring out the best of your 40% of efforts, right? So these sessions, the strategy sessions are mainly focused on your planning. They will help you how you should proceed. Now, these in this session, we'll basically see for IBPS PO, SBI PO, ECGC PO, and IBPS Clerk and SBI Clerk. Now, also in other sessions, we'll see for IBPS RRB also, but English does not come in that exam. So for English, RRB will not be covered because English does not come, right? So let's see how should you proceed, right? Firstly, we'll go with the pattern. Now, the first pattern that you see over here with number of questions, 30 marks, and your time of 20 minutes. This is the standard pattern in your PO exams, right? Whether it is, and your clerk exams as well, whether it is your IBPS PO, SBI PO, IBPS clerk, or SBI clerk, right? And when it comes to ECGC PO, there is a slight variation where your number of questions are 40 and they come for 40 marks, and your time is of 30 minutes here in ECGC PO. So this is a very slight difference. Basically, what the level of questions, as I already mentioned, that in clerk you get a little easier questions, while in PO exams you get bit tough questions. But again, the term easy, since so many applicants are coming in, so many people are applying for bank jobs, this term easy has become diluted in the sense, you will, instead of easy, you'll find some moderate level of questions. So the questions will not be easy for either clerk or your PO obviously, but neither for IBPS clerk nor for SBI clerk. All right.
So, but having said that, you don't have to be scared, that the exam will be tough or moderate, there will be nothing easy. Something scoring is always there in the paper, all right? And we'll move along as we move ahead in this session. We'll see more, right? And don't worry, once you start viewing these sessions and practicing along with us, you will know that it is actually not difficult. जब आप डरते हो किसी भी चीज से, I'm not talking about English, even if you are scared of cons, you have to practice, right? Reasoning, practice, English, tips and practice, all right? So let's move ahead. So yeah, these are some type of questions that are asked in English exams, but it is not limited to this. There are many more type of questions. All right, because every year we see some new pattern question getting introduced. Last year नहीं हुआ था in SBI uh, PO, I think. So, but apart from that, you get at least 4-5 questions which are of new pattern. और वो new pattern कहाँ से आते हैं? There are all these questions जो इन्हीं पैटर्न से वो थोड़ा मिक्स होकर, मतलब जैसे सपोज फिलर्स है और रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट एंड फिलर को कंबाइन कर देंगे, लाइक दैट, if your basic is in place, if you know tenses, if you know all your basics, if you know how to solve fillers, how to solve match the columns, then all these things will not scare you, right? Pattern change ho gaya, students get scared what to do, but these will not scare you once your basics are in place, all right? So let me say this once again. These are some of the topics from which the questions are asked, and it is not limited to this. There are many more topics, many more combinations from where these questions are asked in the exam. So you don't have to worry. Just stay along and just keep practicing. And iXamBee पे all mock tests are free, and we update them according to new pattern. और वहाँ पे you can go and have a look at previous year question papers also, right? So you utilize this free service that you have. iXamBee पे जाइए, free mocks करिए, आपको पूरा पैटर्न एग्जैक्टली जैसे एग्जाम में आया था वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट? ऑल्सो वी हैव सर्टेन मॉक टेस्ट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप उनको भी प्रैक्टिस करिए। फुल आपका टाइमर मिलेगा, सेम वैसा ही आपका इंटरफेस है, and you will be when you will solve it, you will be really practice से जो आप experience आपको मिलता है, exam like experience, उससे you will be more confident when you will go in the exam. Okay, now ये है राइट आपका IBPS PO, राइट? सो आपके चेंजेस हुए थे, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आपके IBPS PO 2020 में आए थे। दो एरर डिटेक्शन आया था आपका न्यू पैटर्न का, क्लोज आया था न्यू पैटर्न का, राइट? और SBI PO 2021 में आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट न्यू पैटर्न का आया था, पैरा जम्बल्स न्यू पैटर्न का आया था। अच्छा, और क्लोज के साथ है न्यू पैटर्न का ईयर क्लोज, अगर आपको पता ही होगा, we are given certain blanks in a paragraph, और फिर उन blanks को हमें fill करना होता है from the given options. But in the new pattern, what they did was they gave a word in a bracket. Like here was let me write it for you. Like यहाँ आपका blank था, and उसकी side में there was a word, say hold was given, right? And certain options were given like held or something, acquire, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। सो आपको ये देखना था ब्लैंक में आइदर होल्ड फिट्स, होल्ड इज राइट, तो फिर आपको नो चेंज रिक्वायर्ड चूज करना था, और उसके अलावा इफ देयर वाज एनी अदर ऑप्शन दैट वाज फिटिंग बेटर इन दिस ब्लैंक, सो दैट वाज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 4, इस तरह से आपको ऑप्शन चूज करना था। दिस वाज द न्यू पैटर्न ऑफ क्लोज टेस्ट, राइट? तो ये हमने देखा IBPS PO 2020 में, ऑल राइट? फिर उसके बाद जब क्लोज आया 2021 में, द पैटर्न वाज वेरी मच जो हम हमेशा से देखते आए हैं, ओनली ब्लैंक्स एंड नो ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, ओके? और आपका इसी तरह से आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी नया पैटर्न का आया था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको विल सी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, कुछ 3 ऑप्शन दे दिए थे, जिसमें तीनों में से कुछ भी आइदर 2 or 3 of them could improve the highlighted part in the main sentence. So इस टाइप का था। So आपको न्यू पैटर्न से you don't have to be scared. They just tweak it a little. बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा करते हैं, but the main thing is that your basics should be clear. अगर आपकी basics clear है, आपने mocks की practice करी है, if you know that what type of questions come, you should be very well prepared for an exam. ऐसे ही नहीं जाना है ना, right? So you don't have to be worried of
द न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, वो आपको एग्जाम के मार्क्स पे मिलेंगे ही, राइट? तो आप जाके वहां पे देख भी सकते हैं. So now, what question that comes into our mind is how to start your preparation, right? अगर आप, और देखिए हर किसी के लिए ना एक ही व्हाट डू यू से रूल डज नॉट वर्क, राइट? समबडी, किसी का लेवल कहीं होता है, कुछ कुछ को इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है, कुछ इंग्लिश मीडियम से ही नहीं होते हैं, राइट? बट दे ऑल्सो वांट टू बिकम बैक पीओ, उनको भी वो सेक्शन तो क्लियर करना ही है, राइट? सो हाउ टू स्टार्ट, एंड इट विल, दिस इज अ वेरी बेसिक अप्रोच, और आप इसको अपनी टाइप से मॉडिफाई करेंगे. टेक द पॉइंटर्स फ्रॉम हियर. ओके, फर्स्टली, know your basics. Okay, I am not talking about your syllabus. It should be आप कहाँ हैं, what are your strengths and weaknesses, how's your preparation. अगर हम आज आपको एग्जाम देने को बोल दें, अगर आप आज एक मॉक लिखें, तो आप कितने नंबर ला पाएंगे उसमें इंग्लिश में? तो you should know कि where do you stand. After all, it is a competitive exam, right? Competition है और उसको हमें निकालना है, right? अब अगर आप बाकियों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद से कंपेयर करिए कि आज आप जाइए, एक मॉक लिखिए, और फिर आप सोचिए कि अच्छा, अब आज मेरे अगर 30 में से सपोज 8 नंबर आए हैं, तो कल अगर आप या परसों अगर आप थोड़ी तैयारी करके मॉक लिखते हैं, योर मार्क्स शुड ऑलवेज इंक्रीज, राइट? सो उस तरह से तैयारी होनी चाहिए दैट आप हर मोमेंट पर व्हेन यू जज योरसेल्फ, then you should always be at a higher position, at a better level, right? In the matter of preparation. Okay, and आगे देखिए, cover the basics, right? Basics of what? Of your syllabus, right? Which is your grammar. Keep your tenses in place, keep your parts of speech in place. अब सब कहेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता है, लेट्स नॉट डू दैट. बट अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ेंगे तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे. फिलर्स क्वेश्चंस होंगे अगर जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस है, वो आपको करने में दिक्कत होगी. ओके, तो इसीलिए सी नोइंग थिंग्स रियली हेल्प्स यू. इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, नॉलेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. सो इंग्लिश में वही है, उसकी रूट है, और उसके जो रूट पे, इंग्लिश की जड़ पे जो बैठे हैं, दैट आर व्हाट? ग्रामर, योर वोकैबुलरी, and your reading comprehension. And if you master on these three things, your tree of English knowledge will be strong, right? तो ग्रामर कैसे पढ़नी है आपको? अब यहाँ देखिए, हम तो आपको पढ़ाएंगे ही, राइट? बट एक सेल्फ स्टडी भी होता है. नोट्स बनाइए, आपने आपकी स्कूल की बुक्स होंगी, राइट? वहां से इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, और वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ होता है. कैसे होता है? यू हैव टू रीड. जब सभी कहते हैं दिस इज नॉट, यू नो, वी जनरली आस्क, अच्छा कुछ भी हमें करना होता है, अच्छा एग्जाम कैसे पास करेंगे? पढ़कर करेंगे, मेहनत करके करेंगे. sometimes people ask someone has to lose weight, they'll go and ask the gym person, अच्छा अब मैं कैसे weight lose करूं? You have to work out, you have to do things to see the results, right? So and be persistent. आपको ग्रामर एक बार ही पढ़ ली, ओके डन. यू शुड, जब आप पढ़ रहे हो, इनफ प्रैक्टिस कीजिए, एंड वंस इट इज डन, क्लोज इट. आपको ग्रामर आ गई है, ऑलराइट? जब आपकी प्रैक्टिस में आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आंसर आपका ठीक आ रहा है, आपको ग्रामर आ गई है. कभी होता है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं, गो बैक टू द बुक, देन बार बार ग्रामर नहीं पढ़िए, ऑलराइट? सो व्हेन वी कम टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब, रीडिंग करने से ही आपकी रीडिंग स्पीड बेटर होगी, रीडिंग करने से ही आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे अच्छे से. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, राइट? तो आप हिंदू पढ़िए या कोई भी मैगजीन पढ़ लीजिए. अगर आपको लगता है एडिटोरियल्स आर सो बोरिंग, आपकी अटेंशन उसमें आप ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, मतलब अटेंशन आपकी होल्ड नहीं हो पाती है वहां पर, तो आप कुछ और पढ़िए, एक स्टोरी पढ़िए, मैगजीन पढ़िए. स्टार्ट विद मैगजीन्स एंड स्टार्ट विद स्टोरीज, ऑलराइट? और उससे आपका काफी बिल्ड होगा अटेंशन का, और आपका जो स्पैन होगा वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा, राइट? और वैसे ही जब आप रीडिंग कर रहे हैं, साथ साथ आप वोकैबुलरी करिए. कैसे? आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड मिला, अब देखिए यही चीज ना एग्जाम के लिए अलग होती है और तैयारी करते हुए अलग स्ट्रैटेजी होती है, राइट? When you are preparing for your exam and you encounter a difficult word, immediately look up in the dictionary. Do not try to decipher the meaning of the word by reading the sentence. That is kind of guesswork. You will never know the exact meaning, right? So when you are preparing for the exam, always, make dictionary your friend. Look up for the meaning of the difficult word so that you are 100% sure that what is the meaning.
and then try to use that word in your daily conversations. Try to form sentences. उस वर्ड के सिनोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स देखिए, पहले एग्जाम में आया कि नहीं आया ये भी आपको पता चलेगा. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, वो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, कुछ फेवरेट्स होते हैं, तो वो वाले वर्ड्स जो हैं उन वर्ड्स को आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए. और इसी तरह जो आप रीडिंग करेंगे उससे आपकी रीडिंग की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी वोकैबुलरी की भी तैयारी हो जाएगी. और आगे आप देखिए कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं, एक जिस हमें ना फॉर्मेलिटी की रीडिंग नहीं करनी है, राइट. वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज, राइट. अब आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कैसे करेंगे? आपने अखबार तो पढ़ लिया, वंस यू रीड द न्यूज़पेपर यू विल थिंक दैट आई नो एवरीथिंग नाउ. मैंने पढ़ लिया, मैंने ग्रास्प कर लिया. बट इफ यू विल रीड योर कोर्स बुक्स, राइट, आप अपनी कोर्स की बुक्स पढ़िए जो आपकी स्कूल में थी, एक 11th का कोई इंग्लिश स्टोरी पढ़िए, and then try to solve the back questions, right? If you are able to solve those correctly, then definitely you have understood the passage. All right? चलिए, तो इसी तरह आपने vocab और रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, राइट. बाकी बेसिक्स हो गए. Now understand exam requirements. अब देखिए, अब एक एग्जाम है, मे बी आपका एग्जाम 1 दिसंबर में है, राइट, पर दूसरा एग्जाम आपका 2 महीने बाद है. तो जो आपकी तैयारी दिसंबर के एग्जाम के लिए होगी, उसी पेज पे आप तैयारी मई के एग्जाम के लिए नहीं कर सकते हैं, राइट. यू हैव टू बी रियली रियली क्विक जब आप एग्जाम की तैयारी करें. यू हैव टू बी स्मार्ट, राइट. नाउ व्हाट इज स्मार्ट वर्क? दैट अगर आपको आपने टेंसेस पढ़ लिया, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, यू हैव स्टडीड ऑल द idioms and phrases, but when it comes to exam pattern, you have not seen the pattern, you don't know that error detection comes or these things come, so you will be in shock अगर आप वहां जाके पेपर देखेंगे, अगर आपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी है तो, राइट. यू शुड नो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं, और आप देखिए, और हर चीज का देखिए. डोंट जस्ट स्टिक टू, अगर आप क्लर्क का दे रहे, ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ क्लर्क का ही पेपर देखूंगा. आप सारे पेपर देखिए. आप पीओ का भी देखेंगे, आप एग्जिम बैंक का देखिए, और उसके बाद आप अपना नाबार्ड का देखिए, आप एसओ का भी देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, आप सारे एग्जाम्स का पेपर देखिए. देयर इज नो हार्म, उसको देखिए और फिर सॉल्व इट. इंग्लिश ही तो है, इट विल बी सेम, थोड़ा ऊपर नीचे ही तो होगा, राइट. एंड द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी, राइट. सो एग्जाम रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आपको सपोज आपको लगता है आपने टेंसेस पढ़ लिया, ऐसा पढ़ लिया, बट आपने रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं देखा, राइट. रूल्स ऑफ ग्रामर आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मीन्स अगर आपके टेंसेस भी आएंगे, उसमें कोई रूल वायलेट हो रहा होगा, उस तरह से एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बना होगा. ऑलराइट. फिलर्स होंगे आपके, तो आप एक रूल को ध्यान में रखकर उसमें फिलिंग करेंगे उस ब्लैंक में, राइट. ऐसे ही सेम वोकैबुलरी एंड रीडिंग, ये आपको पता है, यू हैव टू बिल्ड ऑन दीज 3 थिंग्स. ऑलराइट. आप ये आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन दिस. यू हैव टू स्टडी योर प्रीवियस ईयर पेपर्स. ixamBee की वेबसाइट पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे फॉर एब्सोल्युटली नो कॉस्ट. दे आर एब्सोल्युटली फ्री. ऑलराइट. सो इस सेशन के बाद आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स तो जरूर देखना, कुछ और आप करें ना करें, राइट. एंड okay, so we are moving to tips for grammar. Firstly, rules of grammar. I cannot emphasize more on this कि आपको rules of grammar are so important for you कि आपका हर एक चीज अल्टीमेटली फॉर्म जो होता है ना, हर एक टॉपिक रूल्स ऑफ ग्रामर का फॉर्म ले लेता है, राइट. और इन सेशंस में हम रूल्स ऑफ ग्रामर बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर एग्जाम, राइट. एंड देन स्टडी टेंसेस इन टेबल फॉर्म. अब ये क्या है? अब आप टेंसेस पढ़ते हैं, सबको एक्चुअली स्टूडेंट्स मोस्टली फियर टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. सो टेंसेस के लिए देयर इज अ टेबल, हम लोग तो खैर पढ़ाते ही है अपने कोर्स में. सो इफ यू आर विद अस, अगर आप हमारे साथ हैं, आपको वो टेबल फॉर्म में मिलेगा. इट इज वेरी इजी. एंड इफ यू स्पीक हिंदी या आप कोई भी अपनी लैंग्वेज है आपकी रीजनल, तो उसके कंपैरिजन में आप टेंसेस पढ़िए, राइट. तो आप उसका ट्रांसलेशन अपनी रीजनल लैंग्वेज में करिए, चाहे इफ इट इज हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज. ट्रांसलेट दैट इंग्लिश टेंसेस इनटू your regional language and then you will be able to understand it in a better way. So now there is a table for that.
जो हम डिस्कस करते हैं इन आवर क्लासेस. एंड इफ यू वांट वी कैन आल्सो डिस्कस इट हियर मे बी. एंड यहाँ पर भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट. 20 मिनट्स 1 आवर. क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी गफलत नहीं कर सकते, बिल्कुल केयरलेस मिस्टेक्स नहीं हो सकते, क्योंकि 80 प्लस तक आपका कट ऑफ चला जाता है. So we will try our best. Okay. Oh, okay. Sorry about that. So yeah, हम लोग यहाँ पर always we advise that आप tenses को table form में पढ़िए so that आप अच्छे से उसको grasp कर सके, right? And also now you have to solve school book exercises. Now this is also very essential. अगर आपने अभी तक कुछ, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप कहाँ से लाएंगे मटेरियल? सो दिस इज व्हाट विल हेल्प यू कि आपकी जो ग्रामर बुक्स होते हैं उनके पीछे भी वी हैव एक्सरसाइज एट द बैक ऑफ द ग्रामर बुक्स. सो ऑलवेज प्रैक्टिस देम, then you will be able to understand and know that where do you stand, and if there is some lacking, वो वहाँ practice करने से पूरा होगा, right? Now tips for vocabulary. Firstly, I cannot emphasize more on this. Read, read, and read. The more you read, the more words you will face, and the more words you will face, more meanings you will look up for, and उसके बाद आपकी vocab ज़्यादा अच्छे से clear होगी, build होगी, right? रूट वर्ड्स. नाउ व्हाट आर रूट वर्ड्स? हमने ये बहुत बारी डिस्कस किया है हमारे सेशंस में. अगर आपने वो सेशंस मिस करे हैं, यू कैन ऑलवेज सी दिस इन आवर प्लेलिस्ट, या आप अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे हाउ टू डू वोकैबुलरी. वोकैबुलरी करनी कैसे है? रूट वर्ड्स इज अ वेरी वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ डूइंग वोकैबुलरी. रूट वर्ड्स होते हैं आपके कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं जो विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, मे बी लैटिन और कुछ, उससे कुछ वर्ड्स आते हैं लाइक एम्बी आ गया, ओके, और ऐसे बहुत बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. सो एम्बी, एक्वा आ गया, एक्वा. सो एक्वा आएगा, जहां पे भी एक्वा देखेंगे हमें पता चलेगा इट्स वाटर. तो कहीं पे भी एक्वाटिक आपने देख लिया, एक्वाटिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, एकदम में मान लो आप, ठीक है. एम्बी, एम्बी का मतलब क्या होता है? डुअल या सराउंडिंग्स, राइट, या सराउंडिंग्स. तो डुअल, अगर आपने कभी भी देख लिया समथिंग, द वर्ड इज रिटन एम्बीवैलेंट, एम्बियंस, ambiguous, तो आप समझ जाएंगे इट इज समथिंग आइदर रिलेटेड टू डुअल और रिलेटेड टू सराउंडिंग्स. तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स, फिड हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं डिफरेंट. दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, मे बी लैटिन और जर्मन और स्पेनिश, वहां से डिराइव्ड होते हैं. एंड फॉर्मिंग दीज वर्ड्स वी मेक वर्ड्स इन इंग्लिश. इंग्लिश हैज बीन formed by most of the words in English have come from different languages, right? So if you know these words and आपको एक word पता है ambi, उससे you will know 20 other words, right, starting with ambi. Similarly, if you know what is the meaning of fid, fid means trust, right? तो आप trust के, आप fid के आगे fidelity, right, fiducious, fiduciary, infidelity, तो जहां जहां ये fid आ रहा है, you will know it is something related to trust, loyalty, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा, राइट. तो इसी तरह इफ यू नो वन रूट वर्ड, यू कैन नो इनटू 30 टाइम्स ऑफ दोज इंग्लिश वर्ड्स. ऐसे वोकैब इजीली बिल्ड हो जाती है. नेक्स्ट, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स. अगेन आपको यू शुड नो, अगर आप एक वोकैबुलरी आपने रीडिंग करा, इफ यू एनकाउंटर अ वर्ड विच इज डिफिकल्ट, तो फिर आप उसको आगे यू विल रीड दैट वर्ड एंड आप उसका मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में, एंड उसके साथ आप उसका सिनोनिम देखिए, उसका एंटोनिम देखिए, जिसके साथ 5-6 वर्ड्स और उसमें ऐड हो जाएंगे, राइट. एंड होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, दीज आर द वर्ड्स. होमोनिम्स होते हैं और होमोफोन्स होते हैं. होमोफोन्स दे साउंड सिमिलर, राइट, बट होमोनिम्स होते हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर वर्ड्स जो अलग अलग तरह से सेंटेंस, उनका मीनिंग अलग अलग होता है, बट दे आर spelled in the same way, like bank and bank. There is a river bank and there is a बैंक जहां पे हम मनी रखते हैं, डिपॉजिट होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट. सो इस तरह आपको पता चलेगा. इससे एक होता है फैसिलिटेट और फेलिसिटेट, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट. सो इफ यू नो दीज मीनिंग्स, अगर आपको पता है ये होमोफोन्स का मतलब, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. दिस विल हेल्प यू सॉल्व द ट्रिकी क्वेश्चंस इन द एग्जाम. टिप्स फॉर रीडिंग. कुछ भी नहीं हो सकता है, यू हैव टू रीड, रीड एंड रीड. एंड also if you find reading boring, if you find that you're not able to
अंडरस्टैंड मच या आपका अटेंशन बहुत लूज हो जाता है वहां पर जब आप रीड कर रहे हैं तो स्टार्ट विद मैगजीन, स्टार्ट विद स्टोरी बुक्स, ओके, एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली एडिटोरियल्स पे आइए, उससे पहले न्यूज आर्टिकल पढ़िए। ऑलराइट, ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। She knew that the way, now these are connector type of questions, right? इसमें we have been given two sentences, ऊपर आप देखेंगे ये two sentences है, ये two sentences है, just a second, yeah, right? So यहाँ पर you have to connect them using either A, B, C or maybe two of these and then आपको इससे अपना एक आंसर निकालना है। Now फटाफट बताएं which can be used as a connector here. Anybody who wants to answer? What can be used here as a connector? Yes. So she knew that the way to a man's heart was, but I hope you're ready to set us. Try it on your own. And if you're not able to solve it, we will discuss the solution. Right, and in Zero Se PO, we have the entire series in which we will teach. This is just a strategy session, and in the sessions that will come ahead, starting में आपके strategy के sessions होंगे that to tell you how to proceed studying for a particular section. और फिर उसके बाद we will once the section these sessions are over for say English का आज over हो गया, then from the next session we'll see that how to solve questions, we'll clear some basics, right? कुछ doubts होंगे वो clear होंगे, हम कुछ basics पढ़ेंगे, okay? So yeah, she knew that the way to a man's heart was through his stomach. और क्या होना चाहिए फिर join करने के लिए? These are the connectors. तो इसका आंसर क्या होगा? Is A connecting it? See, as she knew that the way to a man's heart was through his stomach, she cooked a special meal. Yes, it connects, right? Let's see that B connect कर रहा है क्या? Now, since she knew that the way to a man's heart was through his stomach, she cooked a special meal. Yes, B also connects. While she knew that, let's try it for C also. While she knew that the way to a man's heart was through his stomach, she cooked a special meal. Does this fit? While fit हो रहा है? No, while is not fitting, right? Now, it would mean that अगर हम while fit करते हैं, तो it would mean that she knew the fact and at the same time she made the meal. But this is not what is being conveyed in the question, right? In the sentence. So while is the incorrect usage, though as and since are the correct fits here as the connector. So both A and B is the right answer here. One more question of this type. The baby woke up with the phone ring. It wasn't very loud. And connector can either be in the start of the sentence or at in the start of any sentence. It can either be here or it can either be here, right? So in spite of क्या कहीं fit हो रहा है क्या? Can we fit in spite of anywhere? In spite of the baby woke up. No, this is wrong usage. In spite of नहीं fit होता है. Here, let's see. The baby woke up with the phone ring in spite of it wasn't very loud. No, in spite of it not being loud सही होता, but this is not the correct usage. So A does not fit. Now let's see. Though the baby woke up with the phone ring, though it wasn't very loud, even though it wasn't very loud. So B and C both fit, right? So option number 3 is the correct answer. Both B and C fit here. आगे देखिए. Okay, now this is another type of question जिसमें sentence improvement है and we'll have a look here. इसमें I had discussed right in the starting that this new pattern sentence improvement questions came in your exam in 2021 only.
Okay, so abhi देखेंगे what kind of questions are these. So here you have been given, so this is the direction now. So you have been in the following sentence, a part of the sentence is highlighted in bold. Now, अच्छा, sometimes what happens is we think, because हमने mock practice किया होता है, we think that okay, we know the direction, इसमें ऐसे ऐसे होता है. But always read the directions. Do not do this mistake of skipping the directions, right? Because sometimes you have to choose the part containing error. Sometimes you have to choose the part that does not contain the error. Sometimes you have to choose the synonym, sometimes antonym, sometimes wrong spelling, sometimes correct spelling. So you have to take care. You always read the directions. All right, don't skip this. Now, in the following sentence, a part of the sentence is highlighted in bold. Below it are some options suggesting which may improve the highlighted part of the sentence to make it meaningful and grammatically correct, right? Now, we have to choose which of the following options, okay, or option can successfully replace the highlighted part to make the sentence meaningful and grammatically correct. And if no improvement is required, we'll choose option number 5, right? So here, for a data journalist, it's been a real joy having such high quality data to working with and play with for the past few weeks. Now, tell me now, when once we read it, we know that this is not the correct sentence, right? Some tweaking is required here. This is incorrect, so E is not the correct answer. Now, data के बाद what should come? Let's try with first. For data journalists, it's been a real joy having such a quality data to work with and play with for the last few weeks, right? To work with, he worked with the data. Yes, हो सकता है. We work with the data. Yes, okay. This is right. So, high quality data. Let's check for two. To work on. Can we work on the data? Yes, we can work on the data. We can change the data, right? So, 1 and 2 both are correct. So, correct option here will be option B, both 1 and 2. Okay, ऐसा ही one more question. The decision to put off the CBSE Class 12 public examination and cancel the Class 10th examination at the end of a disrupted academic year brings much needed relief by anxious students. Is relief received by कि relief to आता है क्या आता है relief to आता है okay relief to is the correct usage so relief to यानी कि option number 1 now 1 कहाँ है it's in A and B let's A में है और B में है 1 so let's see if even 2 fits right so much brings much needed relief by anxious students got further again no this is wrong this also does not fit so only option A is the correct answer okay let's move ahead now this is entire now, with an unwavering focus on providing vaccine protection to its entire population, the US has advanced its target dates in most all states. Advanced its target dates in most all states. Is it right? No, this is not right. The error is here. Advances target dates in most all states. So let's see the options. Advanced its target dates in almost all states. Yes, this is grammatically correct and meaningful to include all those above 18, age of 16, sorry. And here, advanced its target dates in most of the states, right? और यहाँ क्या कह रहा है? Here this thing advanced to its target dates. No, this is not correct, right? Advance its target date means target dates को आगे बढ़ाया. They have shifted the dates to a time in future. Advance its target dates in most of the states, right? So option number 1 and 2 are correct. So here the correct answer will be option C means both 1 and 2 are right. Okay. Now these are simple fillers. These will also
They may not look, are they not looking simple to you? I just hope they're looking simple to you. There are three fillers. By simple, I mean not much tweaking is there. It happens. They are being modified when they come in exam. Sometimes they come with modification and some additional, what do you say, rider along with them. And sometimes they just come like triple blanks, simply triple or double blanks. Now, the government's dash scheme states that the government's dash scheme, which scheme? Scheme को how can we define scheme? Can a scheme be policy scheme? No, right? Policy scheme तो नहीं हो सकती है. So A will not be the answer. So unilateral scheme. Okay, let's hold on and let's see other options. Modified scheme, yes, can be. Numerous scheme, numerous होता है तो schemes होता है, right? So D is also not the right answer. So numerous is what? Plural, right? So here, if instead of scheme, schemes had been here, so then we could have considered D, right? But since it is only scheme, only B and C have been narrowed down. Now, the government's dash scheme states that legal heirs of farmers who have committed suicide on being unable to pay the loan achieved. Now, let's see the B part first. Achieved from unlicensed. Achieve क्या है? Do they achieve the loan? No, they obtain the loan, right? So the correct answer here will be option C. Option B will be incorrect because achieve is incorrect usage in this blank, right? Okay, so let's move ahead. After a large-scale dash of his Council of Ministers, Prime Minister Narendra Modi, let's just see, after the large-scale dash, large-scale happening of his Council of Ministers is not correct. Yeah, happening cannot be so. So immediately we will discard option C, right? Prime Minister Narendra Modi dash some changes in cabinet committees to reflect the changes in the inclusion of new and dash of certain older minister. Now, any answers? Yes. So here, after large scale, what क्या हुआ? What is the sentence trying to say? The sentence is trying to say that anybody who wants to tell what is the sentence trying to say after before I say something. So the meaning of the sentence is that here, the ministers, the prime minister has had a shuffling of his council, and certain new ministers have been appointed, and old ministers have been given some other roles, right? So let's see now what has happened with the council of ministers after a large scale rejig means shuffling, right? Rejig of his Council of Ministers, Prime Minister Narendra Modi effected some changes. In cabinet committees to reflect the changes with the inclusion of new and elevation. Means new ministers have been included and the old ones have been promoted, right? Of certain older ministers in these crucial committees, right? So obviously, when the ministers are there and the committee is crucial, there will not be dejection, there will be elevation or something positive, right? So option number A is the correct answer here. So we always, whenever we are solving such questions, we grammar always, in the question also it is written that your sentence should be what? Meaningful.
Meaningful and grammatically correct. The sentence should, and this is written in all the questions, all the directions. The sentence should be meaningful and grammatically correct. All right. So only grammatically correct does not work. The sentence should also convey a proper meaning, right? So, yes, after ethics. Now, this is one question, match the columns. This also comes in our exam. This word swapping, these questions have become kind of favorite these days. So, we'll discuss. This is just to give you a glimpse of the type of questions we will discuss in our sessions. And in real sessions, when, after this strategy, when we'll come to our proper teaching sessions, we will first study the basics, all right, and then we will solve questions related to them. So always keep in mind that you have to join these sessions if you want to study for free, all right. ixamBee पे जाइए, mock test practice करिए. All ixamBee mock tests are absolutely free, and here these sessions are absolutely free, and these are for your good. So attend these sessions so that wherever you are lacking, you can ask your doubts in the comment section, and also if you have, also in the live chat, and also if you have any maybe you have a wrong understanding of a concept, if you attend these classes, probably that will also be solved, right? So now column one, now here two columns have been given, and parts of sentences have been given in each column, and now you have to see connect that which two parts connect, either A connects with E or F or D, and forms a proper sentence, a meaningful sentence. So just choose the answer from the given options. So I will leave this to you, that you will give the answer of this question in the comment section after the session is over, okay, not in the live chat. And also, we'll attach a PDF of questions for you to download from here, and then you can solve those questions, right? So just take down that, just make sure that you download the PDF and solve those questions. All right, and I'll see you in the next session. Please be sure that you are there, because free classes generally, they're very rare to find, and when you have them, make full use of them. Okay. Please don't forget to download the PDF. It will be there in just a moment or so. Please drop the answer in the comment section after this session is over, or solve career questions that we'll share with you in the PDF given in the description box.